मैं हूँ लाइबा सैयद और आपका मेरे किचन में बहुत स्वागत है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बॉल। सो हमें उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, लेट्स गेट इनटू इट। पहले हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स, देन हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन सम फ्लावर, देन ग्रीन पेपर, देन सम चिली, then onion, egg, and then we need some cheeses. Any cheese you have you can use it, it's not compulsory. Okay. Then some spices, black pepper, salt and red pepper. Then we need some milk and our main ingredient potato, जिसे हम आलू कहते हैं, जो आज के रेसिपी का किंग है. So let's get started. Now what we're gonna do is we're gonna mash this potato. It's okay guys, होता है. बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है. पोटैटो मैश हो गया है. अब हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं कि हमें पहले क्या क्या करना है. हमें हमारे जो स्पाइसेस है उन्हें बनाना है. लेट्स सी. फर्स्ट वी विल ऑन द फ्लेम. नाउ वी गोना डू इज हम थोड़ा ऑयल डालेंगे. We'll put some onion into it. Let's mix it properly. तेज आंच पे करेंगे ताकि अच्छे से सौते हो जाए. हमारा अनियन सौते हो रहा है, तब तक का हम साइड में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं. We're gonna put some green chili, some green pepper. We're gonna mix it properly. Now we're gonna mix all the spices which we have. Put all the potatoes into it. Just mix it. Now we put all this breadcrumbs into it, ताकि ये जब हम बनाएं तो ये फूटे ना. हमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स इसमें डालना पड़ेगा. ब्रेड क्रम्स की मदद से ये होगा कि बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे में स्टक रहेगी, फूटेंगे नहीं. I'm gonna mix this egg with little bit of salt in it and some milk into it. That's enough. Let's mix all soy things properly.
cheese. Let's cut to it in pieces. And I will show you how to use this cheese also. If somebody don't have this cheese, so then I will show you how to use both the cheese. So let's cut the cheese into the pieces. We take some oil in our palm, like this. Take a tray over here. Take little bit of potato mixture in your palm. Then we're gonna put this cheese into it and make a round ball. Look how simple it is. And हम ऐसे ही सारे balls बना के यहाँ साइड में रखते जाएंगे. Stop. See another one. And हम फटाफट ऐसे ही सारे जब तक आप बनाते हैं. हम इसे पहले ऐसे काटेंगे, then roll it properly, then we will take some potato, put it into it and make a proper round. See, now whatever you have, you can use even mayonnaise also. If those who don't have the cheese, there are multiple. See, अब हमारा ये रेडी हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एक बैटर लेंगे. First we gonna put this into it, then pour it into the egg mixture. रुक जा. Hold. Then do this. ऐसे हमारा सारा ही वो स्टार्ट करना है. अब हम सबके साथ ऐसे ही करेंगे, एक एक करके. You can use, if you don't like egg, you can use only milk and flour mixed together. Add some salt into it and you have this fluffy thick batter, and you can use that also. If those who are vegetarian, so they can skip the egg. Yeah, Raksha, you are training. So guys, आप सब देख सकते हैं हमारा पूरा रेडी हो चुका है. अब इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे for 1 or 2 hours. इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे. तो हम एक एक करके इसमें डालना